Yo, what's up guys? I'm finally back doing these videos. काफ़ी टाइम से सोच ही रहा हूँ करूँगा, but somehow मैं like get caught up with other things and then I get tired and then मेरे को videos करने के like वो motivation सा मिलता नहीं है, because obviously videos करना and then edit करना and then doing all this post effects thing and whatever, but जो भी है भाई मेरे को it's too stressing, so sometimes I just took a break, but I have to do this because मैंने ये channel काफ़ी टाइम से grow किया and then I suddenly stopped it, so I don't think I should do that. I should definitely post more now, so I'm gonna do that for you guys. Or yes, one more thing guys, you see that super chat box out there, so please feel free to support me ताकि मुझे और motivation मिले ये सब content बनाने के लिए. And yes guys, I will try to improve the product more and more day by day as it goes. I'm ordering some more lights, etc. So without wasting time guys, I'm gonna talk about the song called Chooke Dekh by MC Altaf, Divine and Sammohit, and this is the song. मुझे छू के देख किया कितना इंतजार, मुझे छू के देख लगे मुझ में कितने वार, मुझे छू के देख बीते कितने शनिवार, मुझे छू के देख मेरे रूम में देख, मुझे छू के देख किया कितना इंतजार. So yeah guys, so I'm gonna break down the whole, so I'm gonna break down the beat of this song. मैंने कैसे ये beat बनाया, काफ़ी simple beat है, so waste नहीं करते guys, करना मत भूलना इस वीडियो को ताकि और लोगों तक पहुंच सके. So guys चलो without wasting any time. So guys, this is the whole project. Sorry मेरा mic throw off हो गया है because the battery just drained out. So मेरे को ये बिना camera के record करना पड़ा, but it's all good because I think the main focus should be on the project itself. So anyway guys, this is the whole bit. I kept it pretty simple, but at the same time I focused on leaving a lot of room for the artist ताकि उन लोगों का voice fit in हो सके easily. So that's always my main motto when I'm producing these beats for artists. पहले ऐसा था, when I was into that beat making zone, I used to overcrowd the beats and I used to make a lot of overcomplicated stuff. And मुझे ये realize हुआ कि slowly कि artists really don't have that much space in their vocals to fit in. So that's the reason I started to take out sounds and all that. And then I figured out कि artists get enough space in the beats to rap or sing on. But ये भी याद रखना कि guys एकदम दो chord बना दिया और गाना बन गया, ऐसा भी नहीं होता. But just make sure कि you focus on the sound selection. Anyways, this whole project is based on a sample. And the sample I used is from tracklib.com, ये website. ये एक online record store है guys. And over here तुम लोग को एक सब्सक्रिप्शन के बेस में काफ़ी अच्छे अच्छे सैम्पल्स मिल जाएंगे जो तुम सैम्पल कर सकते हो. इसमें ओब्वियसली लाइक दे ऑल्सो गिव अवे द BPM, द क्या कहते हैं स्केल्स एसेट्रा एसेट्रा जो तुम्हें चाहिए. सो कम प्राइस में काफ़ी अच्छे मतलब यहाँ पे तुम्हें सैम्पल्स मिल जाएंगे विच इज़ वेरी इजी टू क्लियर एज वेल. काफ़ी टेंशन नहीं होता, जैसे कि अगर तुम यूट्यूब से कोई सैम्पल उठा लिया तो उसको क्लियर करने में भी काफ़ी मुश्किल हो सकता है. बट यहाँ से तुम लोग को एक ऑलरेडी कमर्शियल लाइसेंस मिल जाता है जिस लोग अपने गाने को स्पॉटिफाई, यूट्यूब एक्सेट्रा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में भी डाल सकते हो. So guys, definitely go and check it out. So guys, for this particular beat मैंने ये sample use किया है and this is the sample. So guys, मेरे को ये स्पेसिफिक स्टार्टिंग पोर्शन नहीं अच्छा लगा, बाकी में काफ़ी वोकल्स आ जाते हैं. सो आई डोंट हैव इनफ रूम टू सैम्पल, सो मेरे को यही था. सो आई जस्ट इस एरिया को लाइक मैंने सेलेक्ट करके डाउनलोड कर दिया था बेसिकली. सो वंस आई गॉट इनटू द उसको मैंने ड्रैग किया FL पे. द फर्स्ट थिंग आई डिड इज, जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज द होल इंट्रो ऑफ द बीट और ये है वो सैम्पल इंट्रो पार्ट का. सो देयर इज अ गन शॉट साउंड जो मैं ये लैपटॉप अलग यूज़ कर रहा हूँ, सो बेसिकली वो खो गया है. सो दैट्स द मेन थिंग गाइस. उसके बाद गाइस वी कम टू द मेन सेक्शन विच इज़ द हुक वेयर डिवाइन स्टार्ट सिंगिंग द सॉन्ग. सो दिस इज़ द हुक. मैंने काफ़ी चॉप करके उनको छोटे छोटे पार्ट में चॉप करके ऐसा बनाया है. सो दिस इज़ हाउ इट साउंड्स.
Okay, sorry, this is it's a very old project, so I completely forgot how I chopped it, but you guys get the idea, right? You can definitely use a lot of chopping through FL Slicer or SliceX और एक वेबसाइट था उसका नाम था मैं भूल गया बट यू नो वहाँ पे तुम लोग स्लाइस करके यू कैन मेक अ होल डिफरेंट मेलोडी आउट ऑफ द सैम्पल सो या उसके बाद गाइस दिस इज प्रीटी सिंपल इसके ये सैम्पल के अंदर काफ़ी कुछ पियानो साउंड्स थे एंड ऑल दैट सो आई डिडंट रियली नीड एनीथिंग एक्स्ट्रा टू put into the beat, I mean put into the melody, so मेरे को ऐसे अच्छा लगा, so I kept it. For the verse what I did was just reversed some parts and this is how it sounds. वही है कि आई जस्ट डोंट वांट टू कीप द होल सेम थिंग लूपिंग थ्रू आउट 2-3 मिनट के लिए ताकि काफ़ी बोरिंग हो जाएगा सो दैट्स द थिंग सो गाइस राइट आफ्टर दैट मैंने आई स्टार्टेड ऑफ विद द किक्स एंड दिस इज हाउ द किक साउंड्स काफ़ी सिंपल ट्रैप पैटर्न है उसके बाद गाइज मैं उसके बाद आई डिड दिस विद द स्नेयर अगेन गाइज वेरी सिंपल ट्रैप पैटर्न ये तो बच्चे बच्चे को भी पता है अभी and then here we have the hi-hat loop और इसमें एक gap है guys just to fit in the bounce you know when you play around with the hi-hats उसी से ही bounce you know decide होता है guys the whole beat का so make sure you always focus a little bit on the hi-hats to bring in the bounce so guys very simple trap pattern again and then वही बीच में थोड़ा सा gaps देके I try to bring in the bounce and then we have this open hi-hat which is playing at the first beat and then the 808 which is following the kick pattern or I always use the spins 808 in like heavy trap heavy beats like this so this is how it sounds so guys I'm just following my ears sometimes just know the scale of the song and then just follow your ears with the 808s so guys this is the whole drums और इसमें थोड़ा सा वही effects है swoosh वगैरह just to give that little bit of an impact मिक्सिंग में मैंने कुछ अलग से कुछ किया नहीं है जस्ट आई रिमूव अ लिटिल बिट ऑफ द हाई एंड एंड द लो एंड काफ़ी रिमूव किया है सैम्पल से टू गिव स्पेस फॉर द वोकल्स एज वेल एज स्पेस फॉर द ड्रम्स एक्सेट्रा किक पे मैंने कुछ भी नहीं किया सिंपली अ लिटिल बिट ऑफ गेन स्टेजिंग दैट्स इट और 808 से मैंने हाई एंड को थोड़ा सा कट ऑफ कर दिया बाकी ब्रो लाइक बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ पे सो गाइस इज अ वेरी सिंपल बीट and just like I said guys simple beats but at the same time if you have good sound selection that's the whole key of making good beats so this is how the whole beat sounds
small things really make an impact. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, those swoosh and those rises etc. काफ़ी use करना अपने beats पे, so that it gives that impact. So this is the whole beat, guys. I hope you like the whole project. I hope you like the song as well. तो song को जाके stream करना and definitely show your support to the whole gang. So this is just a very simple video for me to start off doing these videos again. So make sure you turn on the notification of my channel ताकि जब भी नया वीडियो आ जाए तो you guys check it and you guys take care और मिलते हैं next video पे. Bye bye.